पॉलिटिक्स इतना असर है। वो कहावत है कि भाई दिल्ली में अगर बारिश होती है तो अमेरिका में अम्ब्रेला लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं। So if it rains in India, the people actually start picking up the umbrellas here in the United States. So that is the impact of the politics, and which. So that is dividing us, not to unite the NRIs, because our mindset is same what is happening in India. So if we do not say this is right, this is wrong, if we say you are right, we have to condemn all wrong things. If we do not do, NRIs cannot unite. So our duty is wrong is wrong, right is right, then and then only we can unite. There are issues where you may not all totally agree, but you have to learn to respect to disagree, and one has to have the right to disagree. And unless there is disagreement and that is tolerated, or everybody understand that NRI unit worldwide. Okay, if I start that, I think Rachna ji and Patel bhai, Keshav ji will describe it, why we are doing it, then automatically we go one by one for that. Okay ji, thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm Gary Singh Gorewal from NRI Press Club and NRI Press News Media, NRIpress.com, Los Angeles, California. Welcome to all our NRI Press Club team and participants from US, Canada, UK, and even India. Our today's hot topic is NRI Unity Worldwide by KeshavBhai Patel and Rachna ji Srivastava. Rachna ji, before going here, I can say that although we may hold a desire to better ourselves, our families, our community, and our world, we are divided due to politics and faith and views, not supposed to be. We are very smart people, all are very professional people are here. How we can bring our unity to our NRI community? That I started 25 years ago with this dream here, because our children are marrying each other, we are good friend each other, we always talk each other in India, we never happen like that. It's happened here, something wrong. So we have to think about what ideas, why it's happening, everybody have to different way. Okay, Rachna ji, go ahead. I think you have to unmute. You have to go. Thank you, Rachna ji. तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हम क्यों यहाँ पे यूनाइट नहीं हो पाते हैं, क्या होता है कि हमें अपने देश में जो भी पॉलिटिक्स चल रही होती है वो बहुत अफेक्ट करती है, और उसके चलते हम अपनी जो सच्ची सोच है, जो यहाँ हम एक साथ रह रहे हैं, एक जो सच्ची सोच है उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, उससे डेविएट हो जाते हैं, और अब उन चीजों को खुद पे हावी होने देते हैं। हम बाहर हैं, हम ही एक दूसरे का सहारा है, हमको कोई और सपोर्ट करने नहीं आएगा, हमको आपको सपोर्ट करना है और आपको हमें सपोर्ट करना है। हम माइनॉरिटी में हमेशा रहेंगे यहाँ पे हैं जब तक, तो अगर हम ही आपस में लड़ेंगे हम खुद को ही और माइनॉरिटी में डाल देंगे। तो अगर हम एक साथ जुट होके नहीं खड़े होंगे तो कोई दूसरा हमारे साथ क्यों आएगा। बस ये मतलब मेरा सोचना यही है कि अगर हम यहाँ बाहर हैं तो वी शुड बी यूनाइट, वी शुड बी टुगेदर। सो जो मेन फ्रेम के लोग हैं वो हमको निम्न ना समझे, हमको लो ना समझे। तो अपने आप वही, जैसे कि अगर हम लकड़ी टुकड़े अलग अलग रहेंगे तो कोई आराम से भी तोड़ सकता है, हमको वो यूनाइट होके वो बंडल बन के रहना है जिससे उसे कोई तोड़ना भी चाहे तो ना तोड़ सके। तो कि मेरी तो यही सोच है। थैंक यू जी रचना जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैशव भाई पटेल जी। अच्छा, हम अपना सब्जेक्ट शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम एकता के बारे में जरा सोचें कि एकता की जरूरत क्या है। अपने जीवन में अगर सफलता लानी है, प्रगति करनी है, सुख शांति लानी है, और मैं तो पूछता हूँ कि विश्व शांति अगर लानी है तो हमें एकता की जरूरत है। अब किसकी एकता की? कि हमारे छोटे छोटे हिस्सों में भी एकता होनी चाहिए, फिर बड़े यानी कि जैसे कि गांव में एकता होनी चाहिए, फिर तालुका में हुई एकता होनी चाहिए, फिर राज्य में एकता होनी चाहिए, और फिर देश में एकता होनी चाहिए, फिर विश्व में एकता आएगी।
तो यानी कि एक बात हमने सोचा है, हर एक के जीवन से बोलो, हम हिस्ट्री से सोचे या कहीं से, तो ऐसा मालूम हो गया कि जिन जिन लोगों ने, जैसे इजराइल लोगों ने अपनी जो यूनिटी बना के रखी है, तो थोड़े होने पर भी वो अमेरिका में पूरा प्रभुत्व जमाए रखा है और उन्होंने पॉलिटिक्स में इवन प्रेसिडेंट पर बहुत अच्छा दबाव डाला हुआ था और डालते हैं। तो इस तरह से समझना चाहिए कि वो छोटा देश है, कम तादाद में है, फिर भी एकता की महत्व कितना है। इस तरह से हमारे में गुजराती में एक कहावत है, जहां संप वहां जंप। संप मीन्स एकता, जंप मीन्स सुख। जहां जहां एकता होती है वहां सुख आता है। जैसे रत्ना जी ने बताया वैसे अगर हम बिखर जाएंगे तो बिखर जाएंगे, तो बिखरना नहीं है, हमें सोचना है कि हमें सिर्फ एकता के लिए कुछ भी करना। उस समय अगर अपने स्वार्थ को अगर जाना देना पड़े तो जाने देना है, थोड़ा कष्ट सहन करना आप खुद को, लेकिन समाज का कल्याण होता है तो खुद का थोड़ा सा स्वार्थ का त्याग करना वो जरूरी है। Beautiful. Keshav ji, very good. Pashora Singh ji, Tillon ji. Yeah, I think Rachna ji has started with a wonderful, very small, introduction of her topic. That is, I would like to, where she has written, we should recognize that we have common interests and sometimes common paths. That's why we are all sitting here together. As an NRI, I would also like to add that we have also a unique opportunity as an NRI community, enjoying life in the developed countries, because we have the opportunity to look back on our great Indian society deserving a better life from the hilltop, so to speak. So we have seen here how the people can coexist and prosper, how diversification, how minorities. If you read the history of America, the minorities communities have played a great role, which had been suppressed for a very long time, and America wasn't that great at that time. But since they had started integrating all and everyone, America is number one country in the whole world. And what Rachna ji is saying, if it has worked here, if the we see the minorities working here together and bringing this country where it is, so we can do in India also. At the moment, the minorities are scared somehow. I'm not a politician, but as I see, as I read, as I feel, as I talk to people, the communities and the minority communities don't feel they belong to India. Sometimes, sometimes they feel so alienated, as if they're outsiders. They need to be kicked out. There are some. And all these, there are some hate speeches who propagate this, who say, rather than speaking some sympathetic words to integrate them, they will deliberately say, well, kick them out, send them to Pakistan or send them to over the hills somewhere. And the government just gives a blind eye, don't shut them up. So if we can do something here and can come over with something to integrate ourselves, I think that will be a great example to go back to India. Oh, great, very short. Okay, ji. Dr. Saab, Darshan Kapoor ji, Professor Saab. जी, रचना बहन ने और शोरा सिंह ढिल्लों जी ने और केशव जी ने बहुत अच्छी भूमिका दी है. वेरी गुड इंट्रोडक्शन एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड. यूनिटी जो कि है, what is it that can bring us together, and what are the barriers that really prevent our unity? Yes. So those are the things that I sometimes run into. These are some of the things that really divide us. Politics आपने बोला एक. This is very true. Politics इतना असर है, वो कहावत है कि भाई दिल्ली में अगर बारिश होती है
तो अमेरिका में अम्ब्रेला लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं. Good, So if good. it rains in India, the people actually start picking up the umbrellas here in United States. So that is the impact of the politics, and which is going to be very unavoidable. It is going to be very difficult to avoid that part, but we still have ways and means to really bring unity. One of the areas that I want to emphasize is working with our young people. The youth actually are our future. If there are some ways and means to reach our youth, our young people, bringing them together, regardless of whatever religion they come from, whatever area they come from, if there are ways and means, I have been thinking organizing some youth camps in California, where I would probably like to have young people from different faiths, from different traditions, and different parts of India, like bringing them together, and then teaching and working with them and trying to find out how we can promote more awareness about being together. रचना बहन ने कहा कि हम बाहर हैं और हम लोग माइनॉरिटी में हैं और हम माइनॉरिटी में रहेंगे. This is very true. We are never going to become a majority, but minorities have come together, have to learn how to work together. Good. And one of the biggest example I have actually given is the Japanese community. अगर आप Japanese community, I work with the Japanese community and many other ethnic cultural communities also. I see them, it's a wonderful model community for us. They have maintained their culture, they have maintained their tradition, and they are very effective in this country, in business, government, education, and it's something that we can learn from them like that over there. So working with the young people is my major focus, is that if we can all promote bringing young people together, and that is the future that I see. Thank you. Kapoor sir, Professor sir, this is great. Sakhbal ji, Engineer sir, Detroit. Yeah, I totally agree that we should be united थोड़ा here. ऊंची बोलो, थोड़ा ऊंची बोलो, थोड़ा नेड़े हो. हाँ जी. I totally agree that we should be united here. Though, but we are sometimes here also we have different views about religion and politics back in India. We should ignore that. I think it is not possible and unite here. But my question is that what is our goal once we get united? What do we want to achieve? I mean, I see that here also in Canada and also in US, our people has formed colonies. I mean, in one of the subdivision is all Gujaratis, other subdivision is the South Indian, other subdivision is all the Punjabis. So in that kind of colonization, we cannot get unity, right? So will unity will be based on the ideas, opinions, religious beliefs, or how do we gain unity? Thank you. Kanish ji, okay. Gupta Sahab ji, Professor Gupta ji. मैं तो सिर्फ ये कहना कि ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਹਿੰਦੂ ਮੌਂਕ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ. ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ. ਅਗਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ NRI ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, 2-3 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ. ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ USA 'ਚ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਜੌਬ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. that is the adventure of this country and Canada and Australia. ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1947 'ਚ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ. ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਬ ਸੀ, ਹੱਬ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਵੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ,
आई एम हैप्पी कि फर्स्ट टाइम शिरोमणि प्रबंधक कमेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਰਸਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹਦੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਪਰ if you see the golden temple, what happened? About 10,000 Sikhs were died. If you see the Babri Masjid demolition by all the ruling party leaders which are talking of unite the world, they all leaders, 10,000 Muslims died. A masjid who was wrong or right, 100, 200 years, 300 years, why would do that events? Because we want to get in power. Thirdly, Gujarat riots happened under the leadership of the same person who was the chief minister of Gujarat. I can tell you that without the state convenience, collaboration, nothing can happen in a state. I remember the day when 9/11 took place, there was an order from the president of USA, George Bush, that in our area in Michigan, there are a lot of countries from Iraq, that any person who attacks a masjid owned by Iraqis should be shot at. Why did not happen in India? And you see 1 year back in Delhi riots. So that is dividing us, not to unite the NRIs, because our mindset is same what is happening in India. So if we do not say this is right, this is wrong, if we say you are right, we have to condemn all wrong things. If we do not do, NRIs cannot unite. So our duty is wrong is wrong, right is right, then and then only we can unite. And particularly issues in USA, we are a minority. But in India, we treat the minorities different way. In USA, we want minority to. I'm coming on this topic. Thank here. Yeah. Okay, thank you. Gupta ji, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ add कर देना हैगा. I was in Detroit that time in 9/11. I was working with General Motor Ford. I don't know where we are sitting there. I have seen that building down. Later in the evening, I feel it. We have a city there. Dearborn. I got a lot of people came. 90% people are there. Muslim people. Generally, everybody say that downtown Detroit, which are now Galway, gun be start shipping and they will start killing at night. It never happened that. Yes. President of the United States gave us such a warning. It never happened. It never happened because it depends upon the leader who is the controller at the top. So that we have to, as a NRI, think about that, convey a message as the NRI press, continue for that. Sade Vakil Sahab par Chima Sahab tusi correct kar donge hun age jaake. Chima Sahab. Thank you, Gary Sahab. First of all, I would like to congratulate Mr. Gary Garewal for initiating starting such kind of platform, that's NRI platform, and also talking about NRI unity. So from starting for Rachna ji and everything I have heard everyone, I think the gist is सब लोग almost एक जगह पर common हैं. So my understanding is this: basically we have to work together. When we come out of country, that's why we are called NRI. So out of country, our only recognition is we are NRI and we have something in common with the other people who come out of India. And we should be sharing those things just to elaborate or to strengthen our voice, to raise, because we are in minority. If we have work collectively together, we can raise our voice and we can send message collectively to the local major community here. But at the same time, when we are to work together, we should have to leave politics of India behind. We should not discuss about that politics. Yes, we have to discuss politics, but where we are living, whether the UK, USA, Canada, anywhere, we have to discuss, we have to participate in that politics, unitedly together, because we have something common from India. So we have to work together because our issues, concerns, culture, everything is same. So we have to work together that. But some people may be too advanced. You advocate the politics of some parties in India. If we work that is just pulling us back. We should avoid that. If we do that, then we will be just ruining our interest in the other countries. So we have to work together, just being one thing in common. Yes, we came from India, that is common, and we have to build that commonness for our common interest.
not for the interest of those political parties from which we have left back. We have to start new politics in whichever country we are living there. And just one other thing I would like to comment on KeshavBhai Patel. He said that proverbs and other things, yes, these are good, but these are good in principles. Only difference is what is practically. If these things come into practical, very good. Otherwise, principle, we can say everything, but we have to practice those things. Thank you, sir. Thank you, Ji Masava. Rachna ji, I'm coming on you that actually you are shown off and try to tell us, everybody, why it happening, what we're supposed to do it, you can, everybody, then you get a view from everybody for that. You have something, why it happening? Why? That's why, go ahead. जी वही, जैसा कि अभी चीफा जी ने कहा कि हमको राजनीति को छोड़ना होगा। अगर हम राजनीति पकड़ के बैठेंगे, हम कभी यूनाइट नहीं हो पाएंगे। हम समझते हैं हर इंसान का दर्द है। कोई चीज मेरे लिए खुशी होगी तो वो आपके लिए दुख का कारण होगी। कोई चीज जो आपकी खुशी होगी वो मेरे लिए दुख का कारण होगी। अगर उस थॉट को, उस राजनीति को हम छोड़ दें, हम बस ये सोचे हम जो इस बाहर आए हैं, हमारा दर्द, हम सबका दर्द एक है। अभी जब वीजा नहीं मिलता है, किसी को भारत में तकलीफ होती है, हम सबको एक सी तकलीफ होती है। हम सब कोशिश करते हैं किसी तरह से स्टैंप लग जाए, हम किसी तरह से जा पाए। वो दर्द हमारा है, वो दर्द भारत में कोई नहीं समझेगा। तो जब हम बाहर निकल के आते हैं तो हमारे दर्द और हमारी खुशियां साझी हो जाती हैं। वो हमारा एक साझा चूल्हा है, समझ लीजिए, जिसपे हम सबको अपने अपने विचार सेकने हैं। तो हम अपने उस साझे चूल्हे को तोड़ना नहीं है, हमको हमें जोड़ के चलना है। हो सकता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ वो आपको ठीक नहीं लगे, लेकिन ये कहने के बजाय रचना ये तो एकदम बेकार बात है, तुमने कैसे कह दिया, ये कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बात तुमने बोली, तुम्हारी सोच है, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ, चलो इसके बीच का कोई रास्ता अगर निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं। तो हमारी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी, चाहे वो हमारे विचारों की लड़ाई हो और चाहे हमारे सिद्धांतों की लड़ाई हो, वहीं पे खत्म हो जाएगी जब हम एक बीच का रास्ता निकाल लेंगे। ये सैद्धांतिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल तरीके पे हम कर सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं ये सोचती हूँ, जैसे कि अभी सुदर्शन जी ने कहा कि हमें अपने युवाओं को साथ लेके चलना है, एकदम सही बात, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। हमको अपने घर में अपने नफरत वाले थॉट घर में ही नहीं बोलने हैं। अगर हम घर में वही चीज बोलेंगे, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये कास्ट ऐसी, वो कास्ट ऐसी, हमारे बच्चे वही सीखेंगे, क्योंकि वो तो इंडिया में नहीं पैदा हुए, वो यहाँ पैदा हुए। तो हम जो उन्हें देंगे वो वही पाएंगे। तो अगर हम उनको एक अच्छी सोच दे करके समाज में, अमेरिका में बाहर भेजेंगे, तो जैसे कि हम अभी सुदर्शन जी कह रहे थे, हमारे युवाओं में एक चेतना होगी और वो खुद एक अच्छी राह निकाल के जाएंगे। पेरेंट्स का बहुत 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 इफेक्ट आता है बच्चों पर, और वो दिखाई देता है जब वो बाहर जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो एक मजबूत सोच वाले बने और एक अच्छा भविष्य लेके भारत का आगे चले, तो हमको यहाँ पे अपने बच्चों को मंदिर भी ले जाना चाहिए, गुरुद्वारे भी ले जाना चाहिए, और वो क्रिश्चियन स्कूल्स के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ जहाँ रहती हूँ, यहाँ पे हम सब ऐसे ही रहते हैं। हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम सिंदूर खेला के लिए बंगाली एसोसिएशन भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं। तो हमें अपना भारत अपने बच्चों को यहाँ दिखाना है। हम जो प्यार करेंगे सबसे, बच्चे भी वही सीखेंगे। तो मेरा तो बस मेरी सोच, छोटी बुद्धि से यही सोच है मेरी। वेरी गुड, थैंक यू जी रचना जी। पिशौरा सिंह जी, अनम्यूट करना पड़ेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। पिशौरा सिंह जी थोड़ा ਜਿਹਾ ऐड करना, रचना जी ਨੂੰ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा ने तरीके ने कहा वी हैव टू अवे फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स। वेरी गुड, that I always say that, but sometimes some percentage of our people, उसको आप फेक लीडर भी कह सकते हो, उनका अपना भक्त भी कह सकते हो, कोई केजरीवाल का भक्त होगा, कोई मोदी जी का है, कोई कैप्टन का है, कोई बादल का है, चलता रहेगा। बंगाल में ममता जी का होगा कोई। सो वी ऑल द टाइम फाइटिंग ऑन दिस बेसिस, आवर चिल्ड्रन आर वाचिंग अस व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज द रीजन आवर चिल्ड्रन। हमने बहुत गुरुद्वारे मंदिर में लेकर बच्चों को जाते हैं, जितने मेरी एज के हैं सारे, उनका बच्चा कोई गुरुद्वारे मंदिर में नहीं जाता। उसके बाद वर्ल्ड सिंह दे गो आप यूनिवर्सिटी में जाना शुरू कर, इसलिए नहीं जाते कि दे लुक अप, वी आर टू फेसेस।
अब बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं अंदर कुछ है बाहर रचना जी यू डिड गुड जॉब पशौरा सिंह जी थोड़ा जा इनु एक्सप्लोर करो फिर ताकि आप जल्दी व्यू how we can bring it NRI together that's all don't worry about that thing thank you जी I think रचना जी ने जिन्हें आख्या कि मेरी छोटी बुद्धि है बुद्धि छोटी होगी बेशक लेकिन उन्होंने बात ये बहुत बड़ी की है और ये जो बात है I think it not only leaves us here इधर तो हम minorities unite करेंगे लेकिन the lessons we learn from here by uniting these minorities here will hold good there also. Politics or no politics, you give it any other name, but it has, inter effects with each other. When we say minorities here, we have the members of all communities, and the communities which form the minority here, many of them are in majority in India. So when we combine them here, the people who are, I am now addressing to the people who belong to the majority in India, when they are here in minority, I would like to ask them, how do they feel here? Yeah, here. How they feel here is how the minorities feel over there. So the only way we can unite together is that when we have all these minorities members together, if I belong to a majority community, it is my duty first to come forward and give away something and forego all those things which Rachna ji has said about divergent political stances, faiths, and views. So it should start with the powerful section of the society, not with the weaker section. The people who are in power, if they come, show that kind of thing, that will help tremendously. So that will not only work here, but that will go back and work there also. प्रोफेसर साहब तो जी ये टॉपिक जो है ना हमारा कभी NRI who are outside India, how do we promote unity among the NRI people here? India has problem, India has issues, and we still have attachment, no doubt about it. But actually the suggestion that has been given is a very commendable suggestion that if we give up the politics or at least stay away from it as much as we can, but focus on more constructive kind of things that can say you may condemn something unless you find something that you want to promote. To take its place, we have to find ways and means that actually take the place of what we are condemning like that. So if we are condemning politics, what are we actually getting in place of it? But individually, we human beings are social animal and we are also political animal also at the same time. And politics in India, it is, I sometimes actually don't want to use it, it's very dirty politics over there. And it does affect us over here. And as I mentioned, actually, people get so sensitive about the kinds of things that happen over there. How to stay away from that, I don't know actually. But I would like to see whatever common grounds, common activity that we can promote here. I gave the example of the young people. Bringing young people, taking them to the temples. I would not only like to see that my children, because I come from the Hindu faith, they go only to Hindu temple also. I would like to see that they go to a mosque also, that they could visit Gurdwara also. This is what I'm promoting, interfaith understanding here. This is one of my major, Kushara Singh ji knows, that each semester I have a symposium in my class, how to promote interfaith peace and understanding like that. And my students actually, who are most majority than American, they get the message actually, how to actually live in peace with other faiths and tradition. I take them to different places of worship actually also. So we have to promote this single, not only instructing our children to go to one place of worship, but let them go have some exposure to other places also, whether it is a Gurdwara or a mosque, so that they have a little better understanding and have better feel of it like that. So those are the kind of constructive things we have to plan, think. And actually the youth camp idea that I have been exploring, I really would like to support. I don't have the money and resources,
I really would like to actually do something like that. We have beautiful places up in the mountains here, and there are campgrounds actually where I would like to have each semester, at least during summer, have about 40, 50 young people from different faith traditions, from different regions of India, bringing them together like that. Let us focus on issues that are here important to us, because our children are not going to go back, let me tell you. They are not going to go back. They are going to live here. Why do we want to poison their minds? Why do we want to bring this enmity or this bitterness in their thoughts? So we need to keep them away from those kinds of things. So those are the kinds of things that I emphasize in my actually statements here and there. Thank you. पटेल साहब, ਤੁਸੀਂ ਗੁप्ਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ सुखवान पूछे आप कश्यप पटेल जी। हाँ, चलो पहली दफा मैंने एकता की जरूरत बात की। अब हम एनआरआई एकता के बारे में बात करें। कुछ इसमें गुप्ता साहब ने कुछ ऐसे पॉइंट दिए कि जो पॉलिटिक्स में चले गए और वो एकता के बारे में नहीं थे, लेकिन आई डोंट लाइक टू डिस्कस इट अगेन एंड गिव, बट इफ ही वांट सम बेसिक इंट्रो root cause of certain things, he can ask me also personally. Anyway, एनआरआई जब हम भारत देश छोड़कर दूसरे किसी भी देश में जाते हैं तो उसमें हमारे अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। कॉमन प्रश्न कि सबके लिए यानी कि वीजा की बात होती है, दूसरे के हम दूसरे देश में आते हैं तो भाषा की बात होती है, और वहां आने के बाद सबसे साथ मिलजुल कर रहने का बात होती है, एक दूसरे की मैनर और संस्कृति को आदान प्रदान करने की बात होती है। तो ये सब प्रश्न आते हैं, तो उसमें हम कैसे मिल जाते हैं और कैसे करते हैं अपने के लिए, वो हमारी समझ है, हमारी खुद की समझ से हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, वो हम खुद समझ सकते हैं। वो इस तरह जैसे कि हमारे कोई भी प्रश्न हो तो किसी एक प्रश्न का व्यक्ति का प्रश्न नहीं होता है, ये प्रश्न पूरे समाज का है, ऐसा समझ के सबको साथ मिलकर उसकी सुझाव और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। गवर्नमेंट से भी बात करनी हो तो वो भी गवर्नमेंट से बात करके उसका सुझाव और सॉल्यूशन लाना वो जरूरी होता है। Thank you, Patel sir. I know you about 15 years now, but you are doing great job. Gupta साहब जी, थोड़ा शॉर्ट रखना गुप्ता जी, सारा टाइम दे। हाँ जी गुप्ता जी। मैडम रचना ने कहा कि ओनली एनआरआई, उनके अच्छे विचार हैं, बहुत ही बढ़िया, पर उन्होंने गुरुद्वारे की बात करी और मंदिर की बात करी, मस्जिद की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड का जो ट्रेड है ना, ट्रेड, तो देखो आप जो एनआरआई यूनिटी किस इश्यूज पे होएगी, क्यों हम इकट्ठे होंगे, रीजन क्या है भाई? अगर अमेरिका में वीजा नहीं मिल रहा, एक ये तो वेरी स्मॉल माइनर इशू है, पर एज ए इंडियन हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, चाहे वो किसी रिलीजन के हो, किसी देश के हो, किसी रीजन के। अगर आप गुरबानी के शब्द सुने, उसमें सबसे ज्यादा राम लिखा है, और यहाँ हमारे पास एक गुरुद्वारा है, मैंने वहां कोई गुजराती कभी नहीं देखा, मैंने वहां कोई तमिलियन नहीं देखा, वहां पर कैलिफोर्निया तो बहुत है, कैलिफोर्निया ज्यादा नहीं। मैडम ने वो बात छोड़ दी मस्जिद वाली, क्योंकि चर्च तो चलो इंडिया में नहीं, मस्जिद एनआरआई नो हाउ बट द प्रॉब्लम एनआरआई गुप्ता साहब को समझना चाहिए कि ही इज गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। उन्होंने बात करी, एक मिनट, उन्होंने जब बात करी तो मैं एक काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। उन्होंने कहा देखो आप गोलमोल मत करो। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को गुरुद्वारे में ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, फिर उसकी क्यों बात करते हो? यू आर कंफ्लिक्टिंग थॉट। फिर आप मस्जिद की क्यों नहीं बात करते? अब अजमेर में जाइए, अजमेर एक सेंटर है जहां पर प्राइम मिनिस्टर जितने हैं वो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर जाते हैं। आप केशव जी गोलमोल बात मत करो। मैडम ने कहा हम गुरुद्वारे और मस्जिद की नाम नहीं लेंगे। नहीं सुनो ना, फिर आप उसमें वो तो पॉलिटिक्स कर रही हैं, मुझे जब कर रहा हूं तो आप बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, आप बोलिए। मैंने वो सिर्फ इसलिए नहीं बोला क्योंकि जहां हम रहते हैं यहाँ हमारे आसपास कोई मॉस्क नहीं है, जबकि मेरी फ्रेंड खुद मुस्लिम है, हम साथ में ईद मनाते हैं, लेकिन बस हम वहां जा नहीं पाए, बस इसलिए मैंने। मैडम जी आप सही बोल रहे हैं, आप बोलिए। 99% जो हिंदू कम्युनिटी है, मैं
मैं कट्टर नहीं, हिंदू आप बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, आप आप बोलिए। कट्टर नहीं हिंदू नहीं, मैं फैमिली गुप्ता से साहब बिलोंग से बताऊं कि मैं तो बहुत कुछ गुरुद्वारा में गया हूँ, 2-3 मस्जिद में भी तो गया हूँ, और आपको चर्च में जाने के लिए मैंने इशू नहीं प्रोग्राम है, भी बनाया है। इशू एनआरआई की यूनिटी एक बड़े इशू पे हो सकती है अगर हम रिलीजियसली इकट्ठे हो जाए ना, भाई ये हमारे सारे रिलीजन है, धर्मों का मिलन हो जाए, तो हम एनआरआई इकट्ठे हो गए, सारे जरूर। इकट्ठे हो गए। तो धर्मों का मिलन जो है वो आपको पॉलिटिक्स भी बेटर प्योर करता है, इकोनॉमी भी प्योर करती है, ओके, ग्रोथ भी करती ब्यूटीफुल। है, जो गुरबानी में लिखा हुआ है। चलो शार्ट, गुप्ता साहब सुखपाल जी टाइम दियो, बहुत लिमिटेड टाइम। सुखपाल जी। हाँ जी, मैं वैसे तो सारे ना एग्री करता यूनिवर्सिटी सॉरी यूनिटी होनी चाहिए है, बट गुप्ता जी यू आर आल्सो राइट। बट मैं सोचता भी रचना जी वाई शी डिडंट मेंशन अबाउट मस्जिद, बिकॉज एज यू नो दैट we are common. I mean, Hindu and Sikh are almost common religion. एक दूसरे तो ही निकले हैं. Telling frankly that I also never visited masjid so far in my life. But ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, no problem. But we need to have unity, especially unity. But ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਦੈਟ ਯੂਨਿਟੀ? ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਯੂਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ? ਯੂਨਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿੰਦੇ। ਯੂ ਨੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੀਅਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਐਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰਚਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੈਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ। ਉਹ ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਮੀਨਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ, ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, whether we are in Punjab, Gujarat, Haryana, everything, yes, we have differences, maybe geographical, language, or political, whatever. But when we come out of India, in any other country, we are NRI then. So, सबसे first पर कि if I am Punjabi, I will look for some Punjabi person to. If I can't find Punjabi, I will look for some Indian person. If I can't find this Indian, I will look for some South Asian people. So at least whosoever ever has something common in me, so we can share our commonness, our culture, togetherness. That's the sense of unity. We need that, and that is the basis of our unity. Not, yes, we cannot go away from the politics as well. We have our roots in India. We might have some, because not our political interest, but for the interest of our country. We want something to go good there, not bad thing. So we can have discussion in debates or somewhere else on political system there. We can give our input. But so far as out of country, we are to work here to unitedly, because we have something in common, and for our cultural advancement and our advancement of our common issues. That is a reason, that is a point for which we have to work together. And I think that is the sense of unity on which we should work. Thank you, sir. ਓਕੇ ਜੀ। ਰਚਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਗੀ। Yes, everybody does, then there's no problem. Once somebody is a minorities or majorities, some people are fake leaders here. I'm telling you here, I'm talking about California. I have a lot of experience here. I'm dealing with the people. They were very nice last 5 years. Modi ji, I support him all the time. Nothing here. Movement aundiyan rehniyan, Kisan movement, come other movement. This is always continue. Nobody is a kind of part of this country's problem. That's fine. Why we are divided here? We must condemn fake leaders here. I'm going to be the next topic sometime. Fake leaders. चाहे वो कोई नहीं, इंडियन की गल करदा मैं, NRI दी. They are बहुते नहीं हैगे, only 3%, 2%. They are all the time troublemakers. They try to create a problem. I don't know why. Second, interfaith.
ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਮ ਦੈਟ ਇੰਟਰਫੇਥ, lot of people doing it, ਇੰਟਰਫੇਥ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, KP ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ, he was even pensive come to his place also, because people respect them if we start doing it there. So ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ close ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ we should be, Rachna ji, I think you can be take a lead from the community. Pashora ਆਪਣੇ ਕਸ਼ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ. We can make a strong club. We are working on that. At least 100 people in California. I'm telling you, 100 people, all people be decided, because India consider it, NRI is a very strong. If we people decided, we give them signal there, चाहे मोदी साहब ने, चाहे केजरीवाल, hey, don't bring NRIs in the system here. You have to be keep notice up. You have to create jobs. We want to help you. That we need a message. I think they will be happy to do it. Okay, Pishora Singh ji, close करो जी, close करो. मैं समझा कि डॉक्टर केशव उन्होंने जिस तरह क्या कि no politics. I think when you talk of no politics, that is politics also. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ the example he quoted are from bad politics. So politics is not the third rail that we should stay away from it. We should talk about it, क्योंकि politics is a part of life. जितना अपना lawyer चीमा साहब ने दस्या, politics is everywhere. Even when we talk about uniting the minorities here, that will be politics also. The only thing is that we talk about the good politics, how the politics should run. We are talking about the politics which bring the minorities together to begin with. And do everything. So whatever you do, whatever you make an effort to make is politics. 15 seconds. The emphasis of the interfaith activity is to really to promote respect for other religions. Not that you have to become involved actually, unless until you want actually, but for helping actually people to understand and develop respect for other. Respect is the one which is very important for unity. If the people who want to promote unity, if they don't respect each other, there is not going to be any unity like that over there. So that is the purpose of the actually interfaith activity, is to promote respect, learn about as much as we can. There are going to be differences, and let us celebrate those differences. I believe in celebrating the differences actually like that. So that is going to be there. So the purpose is to promote respect for other religions like that. Thank you, Rachna ji. 15 seconds, Rachna ji. मैं सुदर्शन जी की बात से सहमत हूँ कि हमको अपने डिफरेंसेस को भूलना होगा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट के बिना हम आगे नहीं जा सकते। आप घर में ही देख लीजिए, यदि आप एक परिवार चला रहे हैं और आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप तो इसलिए एक दूसरे की इज्जत करना, उनको सम्मान देना, उनकी बातों को सुनना, जज्ब करना और अपनी बातों को विनम्रता से रखना, ये चीजें होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से यही चीजें हमें यूनाइट करेंगे। Thank you, Sakawal ji. 15 seconds. Yeah, I'm totally in favor of unity based on the religious views, political views, and social views. Thank you. Thank you, Gupta ji. Short. मैं जो असली फ्रीडम फाइटर था वो इंडिया का बहादुर शाह जफर था और हमें उसे पढ़ना चाहिए। और जो सुभाष चंद्र बोस का कमांडर इन चीफ था, वो मैं नाम भूल गया, वो मुस्लिम था। और सुभाष चंद्र बोस को 1 करोड़ रुपया हैदराबाद के मुसलमान ने दिया था। तीसरी बात, हमें इकबाल पढ़ना चाहिए जिसने एक इंडिया की आजादी की पोएम लिखी थी। लास्ट, महाराजा रंजीत सिंह पढ़ना चाहिए जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को इकट्ठा मिलाकर कैसे राज किया। तो वो मैं 4 कंपोनेंट आज थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। Number 1. Thank you, Gupta. Chima sir. So I think again I have to repeat that we have to work on the basis of our common sense, commonness. That's our Indian origin. We have to work on the basis of that. We have to come together to resolve, to advancement of our culture and to resolve or restore our issues
For that, we have to come together and work together, and we have to participate in the politics of the country where we are living and not in the country which we have left. Yes, we can discuss that politics, but we should actually participate in the politics of the country where we're living. Only that way we can advance our culture and also religion and our issues. But for that, we have to make a unity, combine together on the basis of whatever commonness we have. Thank you, sir. Patel साहब जी 15 सेकंड। अब तक हमने जो सोचा हो एकता का महत्व, तो हमारे भारत के जो 4 धर्म है उनमें एकता के लिए हम प्रयत्न यहाँ से कर रहे हैं, भारत में भी कर रहे हैं, भारत में हो रही है और वो जरूरी है। मैं तो उससे भी आगे बढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि हिंदू, जैन, सिख और बुद्धा को इकट्ठा होना है। हमारे भारत के जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो भी हमारे साथ मिल सकते हैं, मिलाना है, उनको भी साथ में। हम सब NRI को साथ में मिलना है और सबको साथ में मिलकर हमारे कॉमन प्रश्नों का निराकरण करना है और आपस में धर्म की वजह से कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात में तय करना चाहिए। लेकिन वो प्रश्न भूतकाल में हो चुके हैं, उसकी नींव को भी देखना चाहिए। Thank you very much. Okay, I just like to say that in working together, there will be issues. There are issues where you may not all totally agree, but you have to learn to respect to disagree, and one has to have the right to disagree. And unless there is disagreement and that is tolerated, no institution or anybody can run where disagreement is looked down upon. Thank you very much, everybody. It's a great topic. I appreciate. We will bring a next topic like this. Let me consult with other people. Thank you. Good night, everybody. Good night. Good night.